nature. What is the name? Boundless nature. We are going to learn keywords of this chapter. So first one is exactly. What is this? Exactly. 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 Second one is thought. 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 Third one is warmer. 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 Fourth one, mandarin. 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 Fifth one, international. 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 Next is mixture. 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 Next, insects. 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 Next, marmalade. 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 Next is chief. 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 Next, bitter. 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 Next is especially. 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 Last one is sure. SOUR. Sure. Let's repeat this. First one is exactly. What is this? Exactly. Next is thought. Thought. Third one is warmer. Fourth one is mandarin. Fifth one is international. Sixth is mixture. Next is insects. Next is marmalade. Next is chief. Next, bitter. Next, especially. And the last one is sure. Unit 1. Boundless nature. See the activity number 1. Nature is boundless in its rich resources. नेचर के रिच रिसोर्सेज की कोई बाउंड्री नहीं होती है. मेन यूजेस दिस रिसोर्सेज टू क्रिएट वंडर्स. मैंस है वो इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं किस में? वंडर्स क्रिएट करने के लिए. आइडेंटिफाई दिस नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्कस देयर यूजफुलनेस विथ योर पार्टनर. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और आपके फ्रेंड के साथ उसके यूजेस का डिस्कशन करना है. एक्टिविटी नंबर 2. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज. Nobody knows exactly from where the orange came. किसी को भी पता नहीं है कि एक्चुअली ऑरेंज कहाँ से आए हुए हैं. दो साउथ ईस्ट एशिया इज थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम. बट साउथ ईस्ट एशिया है वो ऑरेंजेस का फर्स्ट होम है. बट टुडे इट इज ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बट Nowadays ऑरेंजेस है वो पूरे वर्ल्ड के जो वार्मर पार्ट्स होते हैं उसमें ग्रो होते हैं. The Greeks and Romans knew about the orange. Greeks and Romans को ऑरेंज के बारे में पता चला. It is possible that the orange was carried from India to Western Asia and then to Europe. यह पॉसिबल है कि ऑरेंज को इंडिया से वेस्टर्न एशिया और वहाँ से यूरोप
लेके जाते हैं. Today the orange is the most important fresh fruit in international trade. Today international trade में ऑरेंज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट जाना जाता है. The three chief kinds of oranges are the sweet or common orange, the mandarin orange, and the sour or bitter orange. Of this, the sweet orange is the most important. इन तीनों में से स्वीट ऑरेंज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. It is after 3 years that the tree bears fruit. An interesting kind of sweet orange is called the blood orange. इंटरेस्टिंग टाइप ये है कि स्वीट ऑरेंज को ब्लड ऑरेंज भी कहा जाता है. इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर. उसका जो पल्प होता है, अंदर का जो पार्ट होता है वो रेड होता है. एंड इट इज ग्रोन इन द मेडिटेरेनियन रीजन. वो मेडिटेरेनियन रीजन में ग्रो होता है. The temple is an orange with a thin loose skin. ये ऑरेंज का जो ऊपर का पार्ट होता है वो लूज होता है. It is mixture of the mandarin and the sweet orange. वो mandarin और sweet orange का mixture होता है. Let's read again. The story of an orange. Nobody knows exactly from where the orange came, though Southeast Asia is thought to be its first home. But today it is grown in most of the warmer parts of the world. The Greeks and Romans knew about the orange. It is possible that the orange was carried from India to Western Asia and then to Europe. Today the orange is the most important fresh fruit in international trade. The three chief kinds of oranges are the sweet or common orange, the mandarin orange, and the sour or bitter orange. Of this, the sweet orange is the most important. It is after 3 years that the trees bear fruits. An interesting kind of sweet orange is called the blood orange. Its pulp is deep red in color and it is grown in the Mediterranean region. The temple is an orange with a thin loose skin. It is a mixture of the mandarin and the sweet orange.